ये हमारा चौथा सेशन स्टार्ट होगा। आज 8 जनवरी है, आज 8 जून है और अबाउट 6 बजने में 1 मिनट रहता है। तो लास्ट 30 मिनट्स का सेशन करेंगे क्लास के साथ। इनविटेशन भेज देते हैं उनको ताकि वो आ जाएं। जी, कहाँ तक हम लोग देख लिया था? अटेंडेंस लगा दीजिएगा अपनी, आप लोग यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम विद बनियान स्विच। उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। Okay, the problem with the banyan switch is the possibility of internal collision even when two packets are not heading for the same output port. लाजमी अब ऐसा हो मुमकिन है कि आपके पास अगर 4 और 5 आए, लेट्स सपोज किसी पोर्ट के ऊपर, तो पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ पे पास होते हुए वो यहाँ पे कोलिजन हो सके, प्रॉब्लम क्रिएट कर सके वो किसी एक स्विच के ऊपर। तो जब कोलिजन होंगी तो डाटा लॉस होगा आप लोगों का, और डाटा लॉसेस आर नॉट गुड फॉर स्विचिंग, ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। ये एग्जांपल देखें आपके सामने, इसमें हमारे पास एक पोर्ट 1 पे डाटा आ रहा है, पोर्ट 3 पे डाटा आ रहा है। 4 इक्विवेलेंट किया उसने, जो बाइनरी डाटा आ रहा था पीछे से, और 5 भी जो कि 100 और 5 इज 101 इक्विवेलेंट होता है। अगर हम देखें कि किस तरह मूव करेगा तो लेट्स चेक आउट। हमारे पास क्योंकि ये लोअर अप्रोच लेंगे और 0101 आउटपुट पर रहेगा। जब ये 0101 से मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कोलाइड कर जाएंगे सेकंड के स्टेज के ऊपर, और इस तरह हमारा डाटा लॉस हो सकता है। तो ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। सिमिलरली अगर हमारे पास ज्यादा आउटपुट्स इनपुट्स आ रही हैं, तो आप देखें कि इसमें भी हमारे पास डाटा है, वो फर्स्ट स्टेज से पार होने के बाद सेकंड स्टेज में आके वो कोलाइड कर सकते हैं, फर्स्ट में भी कोलाइड कर रहा है यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इनको फिर रिजॉल्व किया गया। हमारे पास एक और बंदा आया और उसका नाम था बैचर बनियान। उसने स्विच क्रिएट किया था। बैचर का जो काम था, उसने क्या किया, उसने व्हाट ही डिड इज इंट्रोड्यूस्ड अनदर मॉड्यूल। उसने एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस कराया बीच में, विच इज कॉल्ड ट्रैप मॉड्यूल। और ट्रैप मॉड्यूल का मकसद क्या था, वो उसके पास बफर होता था, उसके पास एक बफर होता था 3 बिट्स का। और व्हाट इट यूज्ड टू डू इज कि जब आपका डाटा रिसीव होता था, लेट्स सपोज 010 या 111, वो उसको कैलकुलेट करता था ऑन द बेसिस ऑफ मैथ। लेट्स सपोज ये 1 2 4 ये बनता है 5 और ये बनता है 7। तो वो क्या करता था, वो उनको सॉर्ट कर लेता था और उस सॉर्टिंग के लिहाज से वो डाटा को फॉरवर्ड करता था ताकि आप लोगों की कोलिजन ना हो आपस में स्विचेस के ऊपर। तो इस तरह उसने इसको सॉल्व किया। बैचर बनियान का जो पार्ट है, जो उसने काम किया, उसको भी हम देख लेते हैं दोबारा। एक और एनिमेशन हमारे पास है, तो इसी वो देख लेते हैं। Here you can see that Thatcher has actually sorted out the issue of collision. He sorted out the input data. उसके लिहाज से उसने उसको फॉरवर्ड किया एंड स्मूथ ट्रांसमिशन दिखाई गई है। Alright, the sorting switch uses hardware merging technique, but we do not discuss the details here. Normally, hardware module used called a trap is added between the patcher switch and the banyan switch. The trap module prevents duplicate packets simultaneously. Only one packet for each destination is allowed at each tick. If there are more than one, they wait for the next tick. Thank you students for watching. जी, कुछ सवाल इस पर पूछना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पेपरों में भी आता है सवाल ये वाला ना, बैचर का और इसका बनियान स्विचेस के बारे में ना ड्रॉ करने के लिए आता है। तो सवाल आप लोगों के पास हो, पूछना चाहते हो आप लोग?
नहीं, कोई सवाल नहीं है। चलो आगे मूव करते हैं। असाइनमेंट कर लियो कि आप लोगों ने असाइनमेंट के अंदर यही वैल्यूज दी हुई थी कि जी आपके पोर्ट्स पर क्या डाटा आ रहा है और उन डाटा को आपने मूव करवाना है। तो इसके अंदर जो चीज़ मज़े की थी वो ये थी कि अगर आपको याद हो हम लोगों ने स्टेजेस डिफाइन की थी। तो इसमें एक सवाल था जिसके अंदर हमारे पास 4 स्टेजेस डिफाइन होती थी क्योंकि हमारे पास इनपुट जो थी वो 16 पोर्ट्स की थी, इसने यहाँ पर डिफाइन किया है। और इसी तरह इसके अंदर हमारे पास जो आई डोंट नो आप लोगों ने वो 4 स्टेजेस के साथ फिर आगे बनाई होंगी, लेकिन वो स्टेजेस को डिफाइन करना बनाना वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए लर्निंग इम्पोर्टेंट थी। तो होपफुली कि आप लोगों ने ठीक ही किया होगा। वो तो जब मैं चेक करूंगा मिड एंड ऑफ द जून इंशाल्लाह पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जब तक हमारे पास टाइम है तब तक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये कर लें क्योंकि ये सवाल इसमें से बहुत सवाल जो हैं वो आप लोगों के एंड टर्म में आएंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 10 है। Assalamu alaikum class. Welcome to week number 5. First of all, Ramzan Mubarak to everyone. Today we will talk about chapter number 10, which is error detection and correction. First we will talk about introduction to error techniques. Then we'll talk about type of errors. Then we'll try to understand what are block codes, linear codes, checksums, cyclic codes. And at the end we'll discuss about the forward error correcting codes using Hamming. So let's start the lecture. First, we will try to understand why detection and correction of errors are important. So we start with why error detection and correction. As I have mentioned earlier in the lectures, because of the attenuation, noise, and interferences, some errors will definitely occur, and this will lead to the corruption of some of the bits, which are transmitted bits. And particularly, there are two parameters which are very important. Number one is the frame size, and second is the probability of single bit error. Obviously, if the transmission media is noisy, the probability of single bit error will be more. When we are sending data in the form of a frame, the size of the frame will also decide the probability of error in a frame. That means these two parameters, frame size and single bit error, will decide that whether we are receiving a frame with error or without an error. And it has been proved mathematically that the longer the frame size and higher the probability of single bit error, lower is the probability receiving a frame without error. That means the probability of receiving a frame without an error will increase with the increase of the size of the frame, as the probability of the single bit error increases as well. If the frame size is long, and we have a long sequence of zeros and ones, then one of the bits will get interrupted. The interframe will have an error. This clearly emphasizes that the need for error detection and error correction for the communication in a reliable manner. Then we have to devise some schemes so that errors which are inevitable can be corrected. So let's check out the various schemes. Let's first consider types of the errors. This is called a single bit error, where only one bit gets corrupted. This is the binary of the ASCII code. So this 7 bits is representing a specific ASCII code, and the second one is representing some other specific ASCII code. So if there's an error occurs, so it can be interchanged if there's a single bit error. This is very common in parallel transmission. Similarly, let's suppose if we are sending 8
bits in a parallel. So we got 8 lines. And when we are sending in 8 bits, then if one of the line is faulty, when a line is faulty, the signal passing through the line may cause an error. Other lines may not have error. This may lead to a single bit error. This is how single bit error occurs in a parallel transmission if one line is faulty. Then there's another type of error which is called burst errors. It occurs whenever there is more than one bit get corrupted. Let's suppose you are sending a long sequence zeros and ones. So what can happen here? The duration of noise is longer than duration of the one bit. Let's suppose the duration of noise, this is the duration of noise, is covering at least 4 bits. But there is a possibility that some of these bits may change during the transmission. So out of these 4 bits, the 3 bits have got corrupted. So leading to the signal which is faulty or the other end. This is called multiple bit errors, and we call it a burst errors because there's a bursty noise which is responsible for this type of errors. And this is common in serial transmission. When you are transmitting serially, then during transmission, the transmission line may suffer, may be exposed to some kind of fluctuations of electrical equipments, or maybe because of electrical disturbances, maybe possible lightning. Any of the reason, multiple bits may get corrupted because the duration of the noise is longer than the duration of one bit. So what we need to do is to develop a technique that will not only detect single bit, but can detect burst errors. So how it's been done? We have to use a redundancy. What is a redundancy? Let's suppose this is your message. It may comprise of several bits in sequence. We need to put some additional bits which are called frame check sequence. So this thing which is added, and then we will send the transmission. This is the frame check sequence, and we call it redundancy. And this becomes a part of the message which is being sent. And these additional bits can be used for detection, and we can also correct the errors. There are certain mechanisms we'll discuss later. Obviously, this FCS is a function of FCS will be dependent on the message. So this frame check sequence will be calculated based on the message, and then it is sent to the receiver, and the receiver will check the message and the frame check sequence to detect if there is any errors. The popular techniques you can see here are simple parity check. A single bit is added. We have two-dimensional parity bit to enhance the parity. Third technique that is called is checksum. Checksum adds several bits to detect errors. And checksum bit error detection is much better than the first two. And finally, we'll discuss about the cyclic redundancy check, which is very popular. And this is the most sophisticated and best for detecting errors. So let's talk about the parity check. It is the most simplest, the most popular detection scheme. What it does is append a parity bit to the end of the data. Let's suppose we are sending a character 10110001. So there are 7 bits. So we can add a parity bit, and the parity bit is added. Well, it is based on whether you are using an even parity or an odd parity. If you're using even parity, including that bit, the number of ones should be equal to even.
So we have 1, 2, 3, and 4 even. So the parity need to be 0 here because it will make even number of ones inside. In other words, even number of bits in a message. Similarly, if you are using odd parity, then we need to add 1 at the end. So we have already discussed synchronous and asynchronous modes. In asynchronous, we use usually odd parity, and in synchronous modes, we usually use odd even parities. So let's see how is it exactly done. This is the basic scheme of parity check. So this is the data 1 0 1 1 0 1 1 that need to be sent. We need to compute a parity bit. As we can see here, we have got odd number of ones, so we add 1 at the end, which is the parity, to make the message even. So the data along with the parity bit is sent to the transmission media. When it is received at the receiving end, so the receiver check all the bits whether they are even or not. If it is even, it will accept the data. If it's not, then it will reject the data, which is number of bits are odd, it will reject the data. That means some errors are occurred, which have led to the single bit error. This is the basic scheme of using a parity check. And obviously, to compute the parity bit, in both cases, can be done exclusive OR. So let's check the performance of simple parity check. Here, all single bit errors are detected. It can detect all single bit errors, and also it can detect burst errors too. If it can only detect burst errors if the number of bits in the error is odd. So if the number of bits are even, then if one bit is changed, if one bit is changed to 1, another bit is changed to 0, then the corruption is there, but we cannot detect it. The simple parity check cannot detect it. So we find that this technique is not fruitful in burst errors if there are more than one error. If an even number of bits are inverted due to error, the error is not detected by using this simple technique. To overcome this limitation, we can use two-dimensional parity check. In two-dimensional parity check, the performance is improved by using two-dimensional parity check. So we organize the data in blocks of bits in the form of table. So here it is organized in a table. It will be two-dimensional. So parity checks are calculated for each row, which is equivalent to simple parity check bit. Each row has a parity bit. So parity bits are also calculated for all the columns as well. So we have a parity check for each of the rows and parity check for each of the columns. Then both are sent along with the data. And at the receiving end, they are compared with the parity bits calculated on the received data. So let's check example, what exactly how it works. So this is the original data. Here we have divided data into 4 octets, which are called blocks. So we have 4 blocks or segments. When they are organized in the form of table, we got 4 rows, which are basically belong to the segment. For this particular row, the even parity is calculated. So 1, 2, 3, 4, 5, and this is a 6th bit. So we have done for each of the row similar thing, similar method. Then the columns are calculated, the parity bits are calculated, and even parity is added at the end. So for each of the columns, the total number of ones we will calculate, and we'll see if it's odd or not. If it's odd, then we add 1 to make it even. So the last one, the rows, the parity of the parity is calculated, which is in column. So we can see that we sent 4 segments of data, each of 8 bit. That means it's a 32 bits. Earlier, using the checksum itself, and to send that, the total number of additional bits now after adding the parity, these are basically 9.
9 bits are here, and we have 5 blocks. So 9 into 5 is 45 bits. So the redundancy is above at least 13 bits. So we can see here the overhead is much more than a single parity check. If we compare it on multiple columns and rows, then we have at least 45 bits. And obviously, we do it to achieve better performance. The overhead is traded for better error detection capability. How? For example, it can detect not only the odd number of bits, but also it significantly improves the error detection capability compared to simple parity check. It can detect burst errors, but not all. For example, let's check the example again. Let's suppose these two bits, even number of bits get altered, and in the second row these two bits are altered. The 4 bits are changed. Then this column parity bit can be used to detect errors. So now let's check the third scheme, which is the checksum. So in checksum, at the sender's end, again the data is divided into k segments, each of n bits. Just like the two-dimensional parity bit, here also data is also divided into segments. So for example, we have taken the same example from the previous one, which is two-dimensional parity bit. So we got 4 segments, and each of bits are called n bits. Here what we do is we add the bits in the segments, and as we know, when there is a end around carry, it is added with the least significant bit to get the sum. So we have 2 segments. The third segment is added. There is no end around carry here, so there is a partial sum. Then the fourth segment is added. There's an end around carry as well here after adding the 2. So in this we will get the partial sum. So this partial sum which we will get 100111. So this partial sum is now taken complemented of to get the checksum. So here we get the checksum, which is the opposite or complemented of the sum. So this checksum is sent along with the 4 segments. Along with the data segments, we are sending a message signal equal to m bits, which is now received at the receiving and the receivable check in the same manner. All the received segments are added and using one's complement arithmetic to get the sum. So we have one additional step. So we assume here that there is no error taken here. So 1, 2, 3, and 4, these segments are added. So we get the partial sum of them all. We have the 4th segment. So the additional segment, which is checksum, it is added with the sum. So we'll take the complement. If the result is all zeros, then we assume that there is no error has taken place. And the conclusion is to accept the data. If there is an error in the complement, then we will not accept the data. So now let's check the performance of the checksum. Like the simple parity or the multidimensional, it can check all the odd number of bits. Here the performance is same as a simple parity check. However, it can detect most of the errors involving even number of bits. So this means that the burst errors can be detected. So find the performance of the checksum is comparable to two-dimensional parity check. And overhead is little lesser than the two-dimensional check. The single parity we have 32 plus we have 8 bits, which is 40 compared to 45 in case of multi-dimensional parity check. So we have some extra overheads, but less than the two-dimensional parity check. Now let us come to the cyclic redundancy. जी यहाँ तो कुछ सवाल आप लोग ज़हन में पूछना चाहते हो रिगार्डिंग दी मल्टी डायमेंशनल और अपना checksum.
जी, anyone who wants to ask any question? उमर इस्लाम। नो सर, नो। अच्छा, ये जो आप लोगों का चेकसम है ना, इस चेकसम के अंदर बड़े मजे की बात ये है कि क्योंकि ये बाइनरी वैल्यू। मैंने पूछा जी उमर, क्या कह रहे हो? सर, वो गलती से सर इंटरनेट प्रॉब्लम है उसका। अच्छा ठीक है, इंटरनेट प्रॉब्लम है तो अब क्या कर सकते हैं। सर सुबह से लाइट भी नहीं है। ये मैं ऊपर छत पे बैठा हूँ, बड़ी मुश्किल से भाई का नेट उतारा लिया है। तो चलो कोई बात नहीं, वो भी एक दिन की बात है ना, लाइट तो आ जाएगी ना, अब लाइट हर दफा तो नहीं जाएगी होती ना, है ना। अलग करे सर। अच्छा, तो बात ये कि सर इस एफर्ट के भी मार्क्स मिलने चाहिए। जी जी बिल्कुल मिल जाएंगे मार्क्स आप लोगों को इस मार्कफुट के। वो जो है चेक सम में बता रहा था मैं आप लोगों को, चेक सम के अंदर आप लोग इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके ना, तब भी आप इसको इसको वैल्यू निकाल सकते हो। जस्ट टू चेक कीजिए आपकी गलती तो नहीं कर रहे, अगर आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें ना तो इसके थ्रू इस तरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे आ रहा है हमारे पास साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, सीआरसी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो सीआरसी देख लें, दैट इज इम्पोर्टेंट। सर आज के लिए बहुत है। हाँ आज के लिए बहुत है। ये कौन है? सर वैसे भी 5 मिनट रह गए सर। ये कौन है जो कह ये रहा अनस है? भाई हैं हमारे। हाँ कौन था ये? आवाज आई है किसकी? तो मैं कह था सर कि वैसे भी 5 मिनट रह गए वैसे। तो मैं ये कहने लगा था कि इस भाई की बड़ी अच्छा मुशाहदा है कि टाइम कम रह गया तो ये कवर नहीं हो सकेगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग उसको फिर नेक्स्ट वीक कलर कवर कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। चलो फिर आप लोग जाओ, ऐशी करो, 6:30 होने में 4 मिनट रह गए हैं तो। सर जी कोई सवाल है तो सर बहुत शुक्रिया आपका, अपने 4 मिनट पहले आपने छोड़ सर दिया। अगर अभी ऑफ करते हैं सर, मेरे सोए भी और बजेंगे। हाँ ठीक है ओके, बंद कर दें, आप जा सकते हैं उमर, आप लीव कर सकते ठीक है सर, थैंक यू। हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर जी। किसी सवाल पूछना तो वो 4 मिनट जा कर सकता है, मुझे इतराज नहीं है। सर वो एफर्ट के मिलेंगे मार्क्स? एफर्ट के पैसे मिलेंगे तो पैसे याद आ रहे ठंडी में लाइट नहीं है सर पैसे नहीं, मार्क्स की बात कर रहा जी हूँ। जी जी बिल्कुल मिलेंगे आपको, एफर्ट के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उमर भाई कमजोर हो गए हैं सर ऊपर चढ़ के। ऐसे कौन कमजोर हो गया? उमर भाई सर उमर बीमार उमर नहीं थे कमजोर कुछ होता, दिन उमर पहले। नहीं उमर सर मैं कमजोर हो गया और अयाज भाई ने सेहतमंदी इख्तियार कर ली है। उमर भाई आप जाने वाले थे। आप गए नहीं, आप हम जाने तो वाले थे पीछे बातें कर रहे थे आप। यार। ये क्या बात है यार, अयाज आपको भाई जाना क्या कह चाहिए। रहे हो उमर भाई? आवाज ही में रुक आपको